let's start. Uh, Not wrong, you did earlier something called as GST in your last semester. Who taught the subject? Okay, fine. Uh, in this particular semester, we have got these four topics. GST, we have got only a small portion called as payment of tax, how to pay the tax, how to file the returns and all that stuff. And then we have something called as the customs. Customs is the core part basically. Okay. And honestly, this is the easiest part, customs. It has got practical sums as well as a lot of theory part. Stick to the notes that I will upload on the GC. It will be more than enough. It will cover everything comprehensively as per our syllabus. And then we have something called as the FTP, that is foreign trade policy. अब customs आएगा तो foreign trade policy आएगा 100%. These are the four modules we have as per our syllabus, and this is something we need to be very careful of. Um, Ironically, GST is something we'll discuss at the last. I won't touch GST extra. We'll discuss GST at the end of the syllabus. Right now, our focus will be on custom for the next 1.5 to 2 months. And trust me, customs alag about GST. Totally, it's a altogether different ball of game. It's not difficult at all, but it's something completely new for you. These are the part of customs we have. And then the second part, this one. Let's start with the customs directly. I won't waste my time as such. Assume customs as your core part for the internal exams. So Unit 2 and Unit 3 is the core part for the internal exams. Whenever they are conducted at whatever time. Right now, customs is the main core part for the internal exams. Now, because we are studying something called as indirect tax, I assume everyone knows what is the basic difference between direct tax and indirect tax. Whatever taxes are levied on goods and services are all indirect taxes. Whatever taxes are being levied on a person, on an individual, on a company, can be called as a direct tax. So the tax I pay on my car, road tax, GST, all are indirect taxes. Because those are the taxes paid on goods. The tax I pay on courier services, the tax I pay on maybe decorator services are all indirect taxes. So custom is an indirect tax. Now why it is called as custom? What is exactly a custom tax? What is customs? How do you define customs? Why it is called as customs? There are so many different things that we can discuss. Now I'll try to keep my discussion very limited to what is there as per our syllabus. Now, in olden days during the monarchy rules, the kings used to rule the countries. So there were not countries as such, but there were kingdoms. So even though we used to call something called as India, we had various kingdoms. We had the Mughal kingdom, we had the Maratha kingdom, we had the Nizams and so many different kings for different areas. Now what they used to do, if goods from one kingdom had to be sold in another kingdom, they need to pay some entry charges called as the entry fees. So let us say Mumbai is a kingdom. Anyone entering into Mumbai from outside India, from outside Mumbai, so sorry, will have to pay the taxes in those days. So the मार्शल घाट जाओगे तो वहाँ पे नाने घाट करके जगह है. अब नाने घाट, नाने मतलब होता है coins. So नाने घाट has a, what do you say, it has got a small container where anyone entering into from that particular route into Maharashtra had to drop some coins, that is nani, inside that container. And there was nothing but that was the entry fees being paid for
allowing the goods to be sold in your particular uh, kingdom. तो वहां से वो वर्ड आया कस्टम्स. When I say customs, it is a pratha or it's a tradition. And then after the monarchy rule ended and we formed governments, government also started charging the taxes, and therefore it was called as custom duty. Now, post 19th century, we don't have the kingdoms anymore. We have the countries. We have countries clearly demarcated by the borderlines. Now, as per the customs, what is a custom? What is a custom? It's very simple. Custom is a duty imposed on imported or less commonly exported goods. So any kind of duty that is being charged on imported or less commonly exported goods. Now, why they are using the word less commonly, I'll come back to that later on. Um, See, government can't blindly charge you any taxes. Tomorrow, government will say you have to pay the taxes just because you are annuling the year and you are exiting the carbon dioxide. It won't happen that way. तो गवर्नमेंट बोलेगा तुमको रास्ते पे चलना है तो टैक्स पे करना पड़ेगा. ऐसा नहीं होता. That is not how the taxes are being made. We have a constitution. That constitution has got various lists: union list, central list, state list. There is a concurrent list. In the union list, in the union list, there is a list of taxes that can be charged by the central government. We need to look at the legal validity of the customs or the Customs Act. Entry number 83 of the union list, that is list number 1. List number 2 is the state list. And list number 3 is the concurrent list. I want to deal with that part. Who empowers the Indian government to charge you custom duty? आपके ऊपर कस्टम ड्यूटी चार्ज करने का अधिकार गवर्नमेंट को किसने दिया है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया. Entry number 83 of the union list enables the union, that is the central government, to levy custom duty. Sir, is the government entitled to charge you a tax? Yes. Can it charge the tax at its own whims and fantasies? No. Government can't put the taxes at its own wish. भाई साहब, गवर्नमेंट को लॉ फॉलो करना पड़ता है. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 83 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को राइट्स देता है. इट gives them the privilege to tax कस्टम ड्यूटी. अच्छा, ये कस्टम ड्यूटी किस पे चार्ज होगा सर? On import into India and exports out of India. So there are two basic taxable events for custom duty. इंडिया में इंपोर्ट किया, इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किया, कस्टम ड्यूटी लगेगा ही लगेगा, कंफर्म लगेगा. For GST, if you recall, for GST the taxable event is supply. For GST the taxable event is supply. For customs, the taxable event will be import into India or export out of India. Now, what is import? What is export? You know very well. But no, we need to know the legal meaning of what is import and what is export. There are various duties यहाँ पे लिखा है, मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा फिलहाल. Let's talk about what is import and what is export first. What do you mean by import? What is import? Import means bringing into India from a place. Very simple. इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर से कोई भी कुछ लाए तो इंपोर्ट किया जाएगा. कॉमन सेंस है सर. Everyone knows this. But then people might misuse the definitions. Therefore,
Any act will clearly define what is India. Second, when does the import start and when it is completed? Import commences when the goods enter the territorial waters of India. Now, what are territorial waters of India? I'll discuss later on. What are territorial waters of India? We'll discuss later on, maybe in the next lecture. ओके, सो इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स में अगर कोई शिप आ गया गुड्स लेके तो इंपोर्ट स्टार्ट हुआ और वो कंप्लीट कब होता है व्हेन दोस गुड्स बिकम पार्ट ऑफ द मास ऑफ द गुड्स विद इन द कंट्री. सो इंडिया के बाहर से गुड्स इंडिया में आएगा तो वो तुरंत इंपोर्टेड गुड्स नहीं कहलाएगा. इंडिया के बाहर से गुड्स इंडिया में आएगा, वो पोर्ट पे आएगा, व्हाट इज द पोर्ट विल डिस्कस. और वहां से वो गुड्स ड्यूटी पे करने के बाद उठा के लेके जाओगे तो वो इंडियन गुड्स में मिक्स हो जाएगा. और फिर हम लोग बोल दिए इम्पोर्टेड वॉच है, इम्पोर्टेड मोबाइल है. कस्टमर वाला बोलता है हमको इम्पोर्टेड से मतलब ही नहीं. Import starts when the goods enter into territorial waters of India and it is completed when those goods get mixed with the Indian goods. So इंडिया के अंदर के गुड्स में वो मिक्स हो गया मतलब इट इज नो लॉन्गर इम्पोर्टेड गुड्स, इट इज गुड्स क्लियर फॉर होम कंजम्पशन. इसके लिए एक वर्ड है गुड्स क्लियर फॉर होम कंजम्पशन. प्रैक्टिकल लैंग्वेज में आई विल से दिस आर इम्पोर्टेड शूज, दिस इज इम्पोर्टेड मोबाइल, दिस इज इम्पोर्टेड लैपटॉप. ये दुबई से मेरा भाई लेके आया, मेरी बहन लेके आई, मेरा डैड लेके आया. यू मे कॉल इट एज इम्पोर्टेड फॉर कस्टम. एक बार वो तुमने लैपटॉप इंडिया में लेके आ गए और तुम्हारे घर पर आ गया मतलब इंडियन गुड्स में मिक्स हो गया. नॉट इज नो लॉन्गर द इम्पोर्टेड गुड्स. क्लियर है? व्हाट डू यू मीन बाय इम्पोर्टेड गुड्स? इम्पोर्ट मीन्स क्या सर? ब्रिंगिंग एनी गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया. अब इसका लॉजिकल मीनिंग ये भी है, sometimes the goods might come from Chennai to Mumbai. Sometimes the goods might come from Gujarat to Mumbai. और गुजरात से मुंबई में गुड्स आते वक्त वो हो सकता है इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करके आए. Will it be called as imported goods? No. Goods came into India, but did it came from outside India? No. It came from within India. They are not called as the. It won't be called as an import. The next thing we need to discuss is what is export. I'll come back to imported goods later on. Just wait. What is an export? So exactly reverse of what is import. What is an export? Sir, taking goods out of India to a place outside India is called as export. इंडिया से गुड्स उठाने का और इंडिया के बाहर लेके जाने का, that is called as export. So bringing into India from a place outside India is called as import. Taking goods from India to a place outside India is called as. Now the word here is goods. What do you mean by goods? Let's discuss what are goods. Goods as per section, no need to remember the sections as such. The term goods includes vessels, aircrafts, and vehicles. Vessel, anything that floats in the water is a vessel. Ship is a vessel, jetty is a vessel, boat is a vessel. Any emergency life jackets or tubes can be also called as a vessel. Then aircraft can be called as a vessel. Now there can be landlocked countries. दो countries landlocked, उनके बीच में समुद्र नहीं है. India and Nepal, they are landlocked. तो goods come by land, तो vehicle आ जाता है, गाड़ी से जाता है, ट्रक से जाएगा, जीप से जाएगा. So any such vehicle that carries the goods from Nepal to India can be also called as a
गुड्स। टेक्निकली इन सबको कन्वेंस बोलते। व्हाट इज द कन्वेंस? व्हाट्स द कन्वेंस? Anything that carries the goods can be called as a conveyance. The carrier of the goods can be called as a conveyance. तो उसमें बेसिकली तीन चीजें आती है, वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल्स। बट गुड्स के डेफिनेशन में हम लोग ने वेसल्स, एयरक्राफ्ट और व्हीकल्स को भी रखा। एंड सेकंड, एनी स्टोर्स। विद स्टोर्स, what are stores? Stores are the items that are carried along with the conveyance. अब बोट आएगा तो साथ में उसमें डीजल भी होगा चलाने के लिए, बोट चलाने के लिए। एयरक्राफ्ट आएगा तो एयरक्राफ्ट में देयर विल बी सम फूड आइटम्स फॉर द पैसेंजर्स। देयर विल बी एयर टरबाइन फ्यूल फॉर रनिंग द एयरक्राफ्ट। व्हीकल होगा तो उसमें पेट्रोल या डीजल भी होगा। वो सब आइटम्स जो उस वेसल, एयरक्राफ्ट या व्हीकल को चलाने के लिए यूज होते, दे आर कॉल्ड एज द स्टोर्स। नेक्स्ट, बैगेज। लाइक पीपल आर कमिंग इन अ व्हीकल, साथ में उनके कुछ लगेज होगा। पीपल कमिंग बाय एयरक्राफ्ट, साथ में उनके कुछ ना कुछ बैग्स होगा, लगेज होगा। Anything being carried by the passengers is baggage. See, there are ships जो सिर्फ goods carry करते, उसमें बैगेज का सवाल ही नहीं, बिकॉज वहां पे तो सिर्फ कैप्टन ऑफ द शिप होगा या साथ में कुछ क्रू मेंबर्स होंगे। बट देन देर आर ships or vehicles or aircraft that carry passengers. Anything carried by the passengers themselves can be called as baggage. So any luggage accompanied by the passengers is called as baggage. Second thing, जरूरी नहीं कि जो चीज मैं लेके आ रहा हूँ मैं उसके साथ आऊं। It is quite possible that I may carry the baggage unaccompanied. What is unaccompanied baggage? सर, विराट कोहली इंडिया से ऑस्ट्रेलिया मैच खेलने जाता है। वो मैच खेलने जाने के 2 महीने पहले ही अपना पूरा क्रिकेट किट यहाँ से वहां पर बेचता है। Is he carrying it himself? No. That is called as unaccompanied baggage. सर, अनअकम्पनीड बैगेज भी, अनअकम्पनीड लगेज भी बैगेज ही कहलाएगा। तो एनी काइंड ऑफ गुड्स जो मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूं या मैं अपने साथ नहीं कैरी करके अलग से बेच रहा हूं, accompanied or unaccompanied, both cases will be called as baggage. So, sir, goods includes any kind of vehicle, aircraft, and vessel. Goods includes the stores. Stores are the items that are utilized in running those particular aircraft, vessels, or vehicles. Goods includes baggage. Goods includes currency notes and negotiable instruments. I don't want to go in detail what is negotiation right now. तो आएगा तब देखेंगे। Okay, bill of exchange, traveler's check can be called as a negotiable instrument. Okay, foreign currency can be called as a currency here. And it includes any other kind of movable property. So anything that you carry along with you, anything that you carry along with you, that is movable will be also called as goods. देखो ना, क्या है मालूम है, people will always misuse the law. They try to find the loopholes. Okay, they'll try to find out the loopholes some way or other to avoid payment of custom duty. उसके लिए गवर्नमेंट ने लास्ट में लिख दिया एनी अदर movable property. So if anyone is coming into India and bringing anything into India is baggage.
So I am coming from outside India to India after participating in the Olympics, और वहां पर मेरा साइकिल था, वो साइकिल में इंडिया में लेके आया था, तो वो गुड्स कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? गुड्स। वो कन्वेंस नहीं कहलाएगा। ओके, a Russian tourist wants to go to Leh Ladakh for next 3 months. वो नेक्स्ट 3 महीने के लिए लेह लद्दाख जाना चाहता है, और इसके लिए वो अपना बाइक रशिया से इंडिया लेके आना चाहता है बाय प्लेन। तो उसका बाइक भी क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। ओके, ऑल सच थिंग्स विल बी कॉल्ड एज गुड्स। Any foreign currency, including negotiable instruments, baggage, stores, vessel, aircraft and vehicles, and anything that is a movable property will be called as goods. So goods being brought into India from a place outside India is import. Goods taken from India to a place outside India is called as। अब जब इंडिया में गुड्स आते हैं ना इंडिया के बाहर से, हम उसको क्या बोलते हैं? इम्पोर्टेड गुड्स। कस्टम वाला उसको इम्पोर्टेड गुड्स तब तक बोलेगा जब तक आपने उसका ड्यूटी पे करके आप उसको लेके नहीं जाते। इम्पोर्टेड गुड्स का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है। बिफोर दैट आई टेल यू जस्ट वन थिंग। ये देखो, ये वाला एक डायग्राम है, इसको थोड़ा मैं डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा। तो फर्स्ट थिंग, इंडिया के बाहर से इंडिया में शिप आया, गुड्स लेके आया, वो गुड्स लेके कहाँ पर आएगा? उसको इंडिया में गुड्स अनलोड करने का परमिशन कौन देगा? ऑन व्हाट बेसिस दैट परमिशन विल बी गिवन? हु विल गिव दैट परमिशन? दैट्स द फर्स्ट थिंग। we'll discuss that later on। I'm not discussing the diagram at all right now। ये देखो, इंडियन पोर्ट, यहाँ पे देखो, फॉरेन से गुड्स इंडियन पोर्ट पे आया। इंडियन पोर्ट इज दैट लोकेशन, दैट स्ट्रेटेजिक लोकेशन वेयर द गुड्स आर अनलोडेड। ये वो जगह है जहाँ पे गुड्स रख सकते हो आप बिना कस्टडी पे किया, फॉर ए रीजनेबल टाइम। जनरली 5 दिन का टाइम देता है मैक्सिमम, दैट्स मैक्सिमम टाइम। यहाँ पे जब गुड्स रखते हो ना, दे आर कॉल्ड एज इंपोर्टेड गुड्स। दे आर कॉल्ड एज। एक बार ड्यूटी पे करके, कस्टम ड्यूटी पे करके यहाँ से कुछ तुम लेके गए, they won't be known, they will no longer be called as the। मतलब ड्यूटी पे करने के पहले तक ये गुड्स इंपोर्टेड गुड्स कहलाएगा कस्टम्स में। once the duty is paid, then those goods will be called as the goods cleared for home consumption। when I say home consumption, consumption within India। clear है? पक्का? So what do you mean by imported goods? Adabel, what do you mean by imported goods? Imported goods means any goods brought into India from a place outside India। आगे जान दो इससे। But does not include goods which have been cleared for। इसका मतलब क्या है? कोई भी गुड्स इंपोर्टेड गुड्स तब तक कहलाएगा जब तक आप उसके ऊपर ड्यूटी नहीं पे करते हो। आप ड्यूटी नहीं पे करेंगे तो आपको गुड्स क्लियर करने नहीं मिलेगा। इमेजिन, मतलब एक पार्सल आता है यूएस से, वन ऑफ माय फ्रेंड सेंड्स ए पार्सल फ्रॉम यूएस, एक ब्रांड न्यू लैपटॉप कॉस्टिंग ₹2 लाख इन इंडिया। बंदे ने वहां से लैपटॉप भेजा और वहां पे उसका प्राइस लगभग 1,20,000 है, या 1 लाख रुपीज है, मान लो 1 लाख है। अब वो लैपटॉप इंडिया में आएगा पार्सल, तो इंडियन पोस्ट ऑफिस का एक इंटरनेशनल पार्सल वाला डिपार्टमेंट हो, वो वहां पे जाएगा। उनके यहाँ से मुझे कॉल आएगा और ऑफिशियल मेल भी आएगा
मुझे तो पता ही होगा मेरे दोस्त ने भेजा है तो पार्सल। दे विल कॉल मी दैट सर आपका एक पार्सल आया है, इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे करना। मुझे पता है पहले से मेरा पार्सल आया। पार्सल में एग्जैक्टली क्या है हमने सब डिटेल्स कस्टम वालों को दिए हुए हैं। आई विल गो टू दैट पोस्ट ऑफिस, इंटरनेशनल डिपार्ट पार्सल जहां पर होगा। राइट नाउ जस्ट डू इन शॉर्ट, आई विल पे द कस्टम ड्यूटी। ड्यूटी पे करने के पहले तक वो लैपटॉप क्या कहलाएगा, इम्पोर्टेड गुड्स कहलाएगा। मैंने ड्यूटी पे किया, पोस्ट ऑफिस का कुछ चार्जेस वो पे कर दिया, लैपटॉप मेरे को हैंड ओवर हो गया, मैं घर पे लेके आ गया। इजी टू इम्पोर्टेड गुड्स ना। अब वो क्या हो गया, मेरी इंडियन गुड्स में क्या हो गया, मिक्स हो गया। दैट्स द होल थिंग अबाउट कस्टम। प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम लोग बोलेगा यार मेरे दोस्त ने लैपटॉप भेजा है, यूएस से इम्पोर्टेड है, ओके। बट रियल लाइफ में हम लोग बोलते हैं ऐसा, बट कस्टम्स में ऐसा, कस्टम वाला बोलता है जब तक वो गुड्स कस्टम ऑफिसर्स के पास है, जब तक आपने ड्यूटी नहीं पे किया तब तक किसके हाथ में होगा गुड्स, कस्टम ऑफिसर्स के पास होगा। टिल दैट टाइम द गुड्स आर इन द कस्टडी ऑफ द कस्टम ऑफिसर्स, तब तक वो क्या कहलाएगा, इम्पोर्टेड गुड्स। Once you pay the duty and you bring those goods into India, now the goods are mixed with the Indian goods. That is called as goods cleared for। वो हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे बात। ओके, समझ में आया इम्पोर्टेड गुड्स। व्हाट आर इम्पोर्टेड गुड्स, goods which are being brought into India from a place outside India but not yet been cleared for home consumption, goods on which duty has not yet been paid, and the goods which have not been yet been released by the custom officer from the custom port will be called as the imported goods। Once you pay the goods के ऊपर duty and you clear them for home consumption, they will be no longer called as the imported goods under the customs। Is that clear to all? पक्का? I have not discussed what is India. People might laugh at me when I say, why do we need to discuss what is India? This is a law. So law needs to define each and everything very clearly to avoid any kind of misinterpretation and to avoid any kind of conflicts later on। I won't discuss India today, I'll discuss it in the next lecture। थोड़ा सा एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। ये तो मैंने अभी बताया आपको, व्हाट इज कन्वेंस। देखो आप आपके पर्सनल कैपेसिटी में कोई बाइक इंडिया के पास इंडिया में लेके आते हो, वो गुड्स कहलाएगा। लेकिन वो व्हीकल, वो वेसल या एयरक्राफ्ट जिसके अंदर गुड्स भर के हम इंडिया में लेके आते हैं, वो गुड्स नहीं कहलाता, वो कन्वेंस कहलाता है। कन्वेंस का काम क्या है, इंडिया के बाहर से बोट इंडिया में आया, गुड्स लेके आया, इंडिया में गुड्स ड्रॉप किया, बोट वापस चला गया। वो गुड्स वो जो बोट था वो सिर्फ एक जरिया था जिसके थ्रू वो उस इंडिया में लेके आ जाए। That boat or that aircraft was just a means of transportation that was used to bring goods from place outside into India। हाँ, कल अगर अंबानी ने रशिया से चार्टर्ड प्लेन मंगाया खुद के लिए, बाई किया उसने, तो वो प्लेन कहाँ पर रहेगा, हमेशा के लिए इंडिया। वो क्या कहलाएगा फिर, गुड्स। But a plane carrying the goods, an Air India plane carrying the goods from US to India is a conveyance। As a chartered plane bought by a businessman is a vehicle or aircraft that will be called as a goods। Clear है? पक्का? Custom station and custom area दो चीजें हैं। Now there is something called as a railway station, we have heard। What's a railway station? A place where the railways stop। Railways are not like buses or a taxi की भाई हाथ दिखा दिया यहाँ रुक गया, ऐसा तो नहीं होता ना। रेलवे स्टेशन इज द ऑफिशियल प्लेस वेयर द रेलवे इज सपोज टू हॉल्ट। ओके, अगर रेलवे स्टेशन छोड़ के कहीं ऑल टू ऑल्टो के लोगों को नीचे उतारा तो
मोटरमैन के ऊपर एक्शन होता है, he is suspended immediately in the next 24 hours. The protocol has been followed very strictly. Point is, what is a custom station? Custom station is a entry point. इंडिया में गुड्स लाना है तो कहां से लाना पड़ेगा? कस्टम स्टेशन से लाना पड़ेगा। अब अगर एयरक्राफ्ट आ रहा है तो वो एयरपोर्ट को क्या कहेंगे हम लोग? कस्टम एयरपोर्ट। अगर शिप से आ रहा है तो हम लोग उसको कस्टम पोर्ट बोलेंगे। बाय लैंड आ रहा है तो हम उसको कस्टम स्टेशन बोलेंगे। कस्टम स्टेशन इज द ऑफिशियल एंट्री पॉइंट फॉर ए व्हीकल फ्रॉम नेपाल टू इंडिया। बॉर्डर पे कस्टम वालों का एक ऑफिस होगा, एक चेक पॉइंट होगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, आर्मी वालों का होगा वो अलग, कस्टम्स वालों का भी एक चेक पॉइंट होगा। और जो भी गाड़ी नेपाल से इंडिया में आएगा या इंडिया से नेपाल में जाएगा, उसका वहां पे चेकिंग होगा। कैसे होगा? डिस्कस लेटर। तो दैट पॉइंट, एंट्री पॉइंट इज कॉल्ड एज द कस्टम स्टेशन। अच्छा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बोलते हैं ना हम लोग, जरा डोमेस्टिक एयरपोर्ट। डोमेस्टिक एयरपोर्ट में उतना ज्यादा चेकिंग नहीं होता, उतना ज्यादा फिशिंग नहीं होता, लगेज में भी उतना ज्यादा हम लोग चेक नहीं करते। तो डोमेस्टिक में क्या, तुम इंडिया की इंडिया में घूम रहे हैं तो क्या चोरी करेगा? इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में आपको बहुत जल्दी जाना पड़ता है। अगर आपका फ्लाइट होगा एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स अर्ली पहले जाना पड़ता है, एज पर एज आई नो। डोमेस्टिक में 2 घंटा पहले जाके चलता है। इंटरनेशनल में टू बी ऑन सेफर साइड 4 घंटा पहले जाने मिनिमम। दिस इज द मिनिमम आई एम टेलिंग यू। इंटरनेशनल airports are called as the customs airport because goods and passengers and baggage on continuous basis, on daily basis, flow from outside India to India. And it also includes custom ports. Now, custom ports are the ports where the ships will enter from outside India to India. So all these three things: custom port, custom airport in case of aircrafts, and for vehicle it will be custom station. These are called as the customs. Custom station means any custom port, custom airport, or custom station will be called as the custom station. Last we discussed before we wind up the session with a quick review. What is the custom area? इंडिया के बाहर से कुछ इंडिया में आया, इंडिया के बाहर से कुछ इंडिया में आया, तो पहला वो अनलोड होगा। देयर आर पोर्ट्स। अपना एक कोचिंग पोर्ट है, श्रीलंका से गुड्स आया कोचिंग पोर्ट पर, उसको अनलोड किया जाता है। एक कॉमन एरिया होता है जहां पे गुड्स को अनलोड करके रखा जाता है, इंपोर्टेड गुड्स को। इंडिया से गुड्स इंडिया के बाहर भेजना, वहां पर भी ऐसे होगा। गुड्स पहले वहां पे लाके रखा जाएगा, फिर शिप आएगा, फिर शिप में लोडिंग होगा, फिर कुछ इंडिया के बाहर जाए एक्सपोर्ट को। So that common area where the imported goods or the exported goods are normally kept before they are then cleared by the custom officer is called as the custom area. ये वो एरिया है जहां पे आप बिना ड्यूटी पे के गुड्स रख सकते हो फॉर ए स्पेसिफिक टाइम, जनरली 3 दिन से लेके 5 दिन, एक्सेप्शनल केस ज्यादा टाइम मिल सकता है। अच्छा सर, 5 दिन में नहीं लेके गया गुड्स, तो मान लो इम्पोर्टेड गुड्स है, मेरा 2 टन का रॉ मटेरियल आया है जर्मनी से, कस्टम एरिया में अनलोड हो गया, शिप चला गया। अब उस रॉ मटेरियल का ओनर मैं हूं, तो ये मेरा जिम्मेदारी कि कस्टम ड्यूटी तक वो गुड्स में वहां से लेके जाऊं विद इन रीजनेबल टाइम। अगर मैं नहीं लेके गया
तो मुझे रेंटल चार्जेस पे करना पड़ेगा। आई नीड टू पे द रेंटल चार्जेस। हाँ, वन ऑफ आवर क्लाइंट दे आर लॉन्ग टाइम बैक, समवेयर इन द ईयर 2002 और 2003 समथिंग, 20 साल पहले की बात है। हमारा क्लाइंट था, उसका एक मशीनरी आया 3 साढ़े 3 करोड़ का उस जमाने में, विच इज नियरली 20 करोड़ टुडे। उसका एक मशीनरी आया 3 साढ़े 3 करोड़ का, आउटसाइड इंडिया, आई थिंक फ्रांस समवेयर और जर्मनी, कहाँ से तो आया था, किसी यूरोपियन कंट्री से आया था वो गुड्स। वो मशीनरी इंडिया में आया, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंटेशन को लेकर प्रॉब्लम था, उसकी वजह से उसका क्लियरेंस नहीं हो रहा था, मतलब वो आप लेके नहीं जा पा रहे थे ड्यूटी पे करके, कुछ इश्यू था। तो 1 महीने तक कुछ वहीं पे पड़ा था मशीनरी। अब कस्टम एरिया मतलब कोई ऐसा गोडाउन नहीं, ओपन स्पेस है, आंधी बारिश तूफान आए वो तुम्हारा मशीनरी उसमें भीगेगा। तो क्लाइंट वॉज वेरी मच वरीड, क्लाइंट वॉज वेरी मच वरीड। तो उसने शायद होगा प्लास्टिक से कवर कर दिया होगा मशीनरी, बट इज मेन वरी वॉज नॉट जस्ट द मशीनरी। अगर आप उस लिमिटेड टाइम में कुछ लेके नहीं जाते हो ना, तो आपको भी चार्जेस पे करना पड़ता है इनडायरेक्टली। कस्टम वाला बोलता है कि आपका गुड्स इंडिया में आया, हाँ ठीक है आया, ठीक है, हमने उतार के रख दिया। कहाँ पे रखा हमने? कस्टम एरिया में। कहाँ पे रखा हमने? यहाँ से उठा के लेके जाओ, ड्यूटी पे करो, कुछ लेके जाओ। अगर आप नहीं लेके जाओगे तो हम आपको चार्ज करेंगे सम रेंटल फॉर डिले इन टेकिंग द गुड्स। अरे लॉजिकल है ना सर, आप हमारी जगह यूज कर रहे हो, पोर्ट अथॉरिटी क्या बोलेगा? कस्टम वाला नहीं बोलेगा, पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जो पोर्ट वाला है वो बोलेगा तुम हमारी जगह यूज कर रहे हो, तो इस जगह भाड़ा देना पड़ेगा। दैट आर कॉल्ड एज द डिमोरेज चार्जेस, उसको बोलते हैं डिमोरेज चार्जेस। आ गया सर्चिंग फॉर द डेफिनेशन। हाँ, this is levied under the Port Trust Act by, not by the customs, by the port authority. If the importer fails to clear the goods, unloaded goods within the specified time period, then demurrage charges becomes payable. मतलब आपको ये कहा जाता है कि भाई आपका गुड्स इंडिया में आया तो कहाँ पे रहेगा? कस्टम एरिया में रहेगा। कब तक रहेगा? फॉर रीजनेबल टाइम। और उतने टाइम के बाद अगर आपका गुड्स वहां पे रहता है तो आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर ऑक्यूपाइंग द स्पेस ऑफ द पोर्ट अथॉरिटी, and therefore you need to pay some charges, which charges are nothing but these are the demurrage charges, charges for delay in collecting the goods from that place. सेम चार्जेस है एप्लीकेबल एवरेज है। सवाल ये भी है सर आपके मन में, अगर वहां से कुछ नहीं उठाया तो विद इन 1 मंथ वहां से कुछ क्लियर नहीं किया तो पोर्ट वाले के पास अथॉरिटी है, वो तुम्हारा कुछ ऑप्शन में बेच के अपना पूरा पैसा रिकवर करेगा, कस्टम ड्यूटी का पैसा रिकवर करेगा, बाद में तुम्हारा माइनस करके तुमको पैसा देगा। क्लियर है ऑल ऑफ यू? Okay, so we have realized we recap of what we have done today so far. We'll again go through all these things in tomorrow's session or whenever we have the session in the future. We discuss what is customs, who has given the authority to the Indian government, to the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट को एंट्री नंबर 83 ध्यान में रखो। Entry number 83 of the Union list allows the Union government, that is the central government, to charge something called as customs duty. What is the custom duty? Custom duty is the duty that is charged on goods imported into India or goods exported from India. What is import? Bringing goods in India from a place outside India is import. What is export? Taking goods from India to a place. Then we saw what is goods. Any kind of vehicle, vessel, aircraft is a goods.
any kind of any kind of किसे भूल गया मैं? हाँ, any kind of vessel, vehicle, aircraft is a goods. करेंसी मतलब फॉरेन करेंसी, बट ऑब्वियसली करेंसी मतलब फॉरेन करेंसी. ओके, दैट डजंट मीन दैट इंडिया के पास इंडिया में जितना मांगता होता है इंडियन रुपीज लेके आ सकते हैं. एनी काइंड ऑफ करेंसी विल बी कॉल्ड एज गुड्स. Negotiable instruments like traveler's check will be also called as goods. Stores. What are stores? The items that are accompanied along with the vehicles or the aircraft or the vessel will be also called as goods. And baggage will be called as goods. And any other movable property. Any other movable होगा तो वो इंडिया के पास ही इंडिया में आएगा ना, या इंडिया से इंडिया के पास जाएगा. इमूवेबल तो नहीं जा सकता ना किधर भी. ओके. Then we talk about something called as the custom station, custom port, custom airport, or custom station is called as the custom. Okay. Then talk about the custom area. What is the custom area? So that area where the goods are generally kept, unloaded and kept before they are imported into India, before they are exported from India to outside India, is called as the custom area. This is the area where the goods can be kept for reasonable time, generally 3 to 5 days. If it goes beyond that time, then you have to pay something called as the demurrage. To whom do you pay the demurrage charges? Not to the custom वाले को कस्टडी से मतलब है. कस्टम वाले को उसका ड्यूटी से मतलब है, उसको बाकी चीजों से मतलब नहीं है. ओके. So demurrage charges are being levied by the ports authority and they are payable and the amount can be very reasonable and can be quite substantial, quite big if you don't clear the goods within a reasonable time. Clear है यहाँ तक सब पक्का? Anything else you want to ask me? Then we also discuss what is imported goods. तो जब तक ड्यूटी नहीं, ड्यूटी पे करके गुड्स आप इंडिया में लेके नहीं जाते तो तब तक गुड्स क्या कहलाएगा? कस्टम एरिया से गुड्स जब तक तुम्हारे घर पे नहीं आते तब तक गुड्स क्या कहलाएगा? इंपोर्टेड गुड्स कहलाएगा. एक बार वो गुड्स ओके, एक बार वो गुड्स इंडिया में आ गया ड्यूटी पे करके, technically, legally, as per Customs Act, it won't be called as goods at all in the future. So it won't be called as imported goods at all. So तो क्या हो जाएगा? Goods cleared for, वर्ड याद रखना, बहुत बार बार आएगा. Goods cleared for home consumption. ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? पक्का?